So today's our lecture is on irrigation system as well as the smart farming techniques. What techniques we should adopt uh, for smart farming, and what is the irrigation first? What is the irrigation system, and what new techniques we have to choose in the greenhouse to manage our water management as well as the nutrients. So we'll see. First of all, we know what is the crop water requirement. What is the crop water requirement? As we all know, it is the defined as the depth or the amount Madam, of can you water. speak loudly? Pardon me, sir. I said, can you speak loudly? Your voice is not clear. Yes, yes. My voice is cracking or something. It is not clear to everyone. Clear, ma'am. Okay, madam, clear. Voice is low actually. Okay. So first of all, irrigation systems. What irrigation systems we need to adopt in the greenhouse for the high-tech greenhouse, or NVPH or the shade net house, to manage the water system, to manage our water management properly, or to manage the nutrients in an efficient way, to grow our product in a with respect to the quality as well as the quantity also. First of all, the crop water need. What is the crop water need to produce a good yield? The crop water need, we all know, is defined as the depth or the amount of water which needed the plant needs to meet the water loss through evapotranspiration. So what is the evapotranspiration? We'll see. These are the two processes. One is evaporation, and another is the transpiration. So what is the evapotranspiration? It is the combination of the two terms. One is the evaporation and the second is the transpiration, which is measured in order to better understand crop water requirement, irrigation scheduling, and watershed management. So evapotranspiration depends upon what factors it depends upon. Evaporation is what inside the greenhouse, when the air comes inside the greenhouse from the pad, it first जब ये स्टिक होता है पैड के साथ अंदर आता है, तो क्या होता है, पैड के यहाँ पे रन क्या होता है, पानी रन होता है, वाटर रन होता है. तो वाटर रन होने से क्या होता है, जैसे पानी पैड के ऊपर गिरता है, विद द हेल्प ऑफ दी सोलर हीट की वजह से क्या होता है, वो वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं. तो इवेपोरेशन वहां पे होती है. फिर ट्रांसपायरेशन कहाँ से होती है? जो प्लांट्स ट्रांसपायर करते हैं, जो प्लांट्स रेस्पायर करने के टाइम पे या जब स्टोमेटल ओपनिंग क्लोजिंग होती है, तब ट्रांसपायरेशन लॉसेस जो होती है, उसको दोनों को टर्म्स को जब हम मिलाते हैं तो इवेपो ट्रांसपायरेशन बोला जाता है. उस प्रोसेस को हम कैसे बेटर अंडरस्टैंड कर सके, कैसे वो कैसी चीजें, कैसे हाउ इट डिपेंड्स अपॉन दैट एंड हाउ इट अफेक्ट्स the total crop water requirement. So it depends upon the irrigation scheduling, what irrigation scheduling you are practicing inside the greenhouse, and what are the watershed management. So two components, the evaporation and the transpiration, are the two components which are very much helpful, or we should understand first the crop water requirement. First, evaporation, we all know, is the movement of water directly to the air from the source, फ्रॉम सॉइल एंड वाटर बॉडी से जो एयर जो वाटर है डायरेक्टली जब एयर के थ्रू, वेपर्स के थ्रू वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाता है, दैट इज द इवेपोरेशन. सो इट कैन बी अफेक्टेड. किस किस से इवेपोरेशन इफेक्ट होती है? व्हेन हीट इज वेरी हाई, तो इवेपोरेशन प्रोसेस हैपेंस. व्हेन ह्यूमिडिटी इज वेरी हाई, सोलर रेडिएशन बहुत ज्यादा रहती है, एंड विंड स्पीड, एंड एज वेल एज द ट्रांसपायरेशन लॉसेस. ट्रांसपायरेशन लॉसेस कैसे as called it as a transpiration. So transpiration maximum happens in the daytime. Why? Because the stomatal opening closing ज्यादा डे टाइम पे होती है, क्योंकि फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ज्यादा डे टाइम पे होती है. तो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होती है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वो ग्लूकोज और वाटर एंड ऑक्सीजन रिलीज होता है. उस टाइम पे हाईएस्ट स्टोमेटल ओपनिंग क्लोजिंग होती है. जब स्टोमेटल ओपनिंग क्लोजिंग हाई, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी इन्फ्लुएंस होता है. और उसके क्या फैक्टर्स है, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स इज दैट? फर्स्ट इज द प्लांट टाइप क्या है, उसका लीफ फॉइलेज कैसा है, उस पर डिपेंड करता है. आप सॉइल टाइप लगा रहे हो, अभी आप हाइड्रोपोनिक्स लगा रहे हो, उसमें ऑल टाइम वाटर इज रनिंग इन द चैनल्स. So how we can balance with the
with the photosynthetic activity. Second is the weather conditions. If solar radiation is very high, so what happens? Transpiration mostly ज़्यादा often हो जाती है, and water content also, and it also and the cultivation practices. What cultivation practices you have adopted? It all affects the transpiration levels. So then, type of watering systems in the greenhouse. What type of watering systems we should adopt in the greenhouse to manage the better water management as well as the nutrient system in the greenhouse? So there are many types. There are mostly subheads I have written here. One is the manual irrigation and the hand watering. In that, sprinkler and the boom irrigation is to be recommended when you one is the manual irrigation, with the help of the pipe, we water the trays, or like we water in the form of jari जिसे बोला जाता है, उससे भी पानी देते हैं. So that is the manual irrigation or water handling. Second part is the overhead irrigation system. Overhead irrigation system. Under this overhead irrigation system, the two type of systems comes in the greenhouse I am talking about. One is the sprinkler and second is the boom irrigation system. Boom irrigation system mostly recommend in the high-tech greenhouses when you have to irrigate the 560 square meter of area or 1000 square meter of area, and you want the fully automatic high-tech greenhouse. So in that, we always recommend, when you have produce the seedlings, we always do recommend that you should go with the boom irrigation system for the fertigation. Then in the third subhead is the surface irrigation. What is under that? It involves the reshaping the land to direct surface water to crops and gardens. So surface irrigation includes drip irrigation, perimeter watering system, tube water system. So these are the three systems we should adopt inside the greenhouse in the surface irrigation. In drip irrigation, mostly we do give when we have to grow the crop like tomato, capsicum, tomato in the cocoa peat. So that time we suggest to go with the drip irrigation. Or for example, when in the hydroponic system, we are using the Dutch bucket system. That time we are adopting aero drippers. The main drip line is to be connected with the main reservoir, and that the aero drippers are to be connected to each bucket. Each one bucket contains one aero dripper. So that is to be adopted in the hydroponic system, in the Dutch bucket system. And the fourth one is the subsurface irrigation system. Subsurface irrigation system, under that the four components, four different systems are to be added. One is the ebb and flow system, which is one of the system of hydroponic crop, like seedling crop, where the scorching comes. So we do prefer to cultivate the seedling in the ebb and flow system. So it is easy, and the seedling doesn't get very less mortality we found when we use the ebb and flow system in the hydroponic system. The second one is the capillary watering system. Third one is the floor flood irrigation, and fourth one is the four type of watering system or the irrigation system we should adopt inside the greenhouse. Some are to be recommended in the hydroponic system like drip irrigation, aero drippers in the form of the Dutch bucket system, and ebb and flow system when we have to go for the growing of the seedling inside the greenhouse under hydroponically. So we do recommend that you should adopt ebb and flow system. First one is the manual irrigation. Here, one of the picture has to be shown how the manually you should irrigate the plants, like the small plants in the floor. First, they have in the troughs they have planted the plants in the cocoa peat, and with the manually irrigation they are given. So under that, it is the most common, and it is uneconomical and expensive system of watering, but still is followed. Why? Because labor is cheap. Where labor is cheap, so we should sometimes follow to give the watering through manual irrigation because it is uneconomical, and scale of operation is rather small, and automation is not to be practiced. So we can manually irrigation is to be preferred when we need our labor is to be very cheap, and it is one of the uneconomical form of giving the irrigation system. It requires considerable time, and it is not a pleasant work.
but still it is followed where crop is at a high density, like if the nursery production, like for example 1000 square meter of area is there, and we just want to keep our cost down, so that time we do prefer that we should go for the manual irrigation. Seed flats or the pots. So some of the examples where we have to adopt the manual irrigation. So it is practiced very carefully. Care should be taken that force of water should not be broken either by using the fine spray, rose spray or beaker at the end of the pipe. So this is one of the form of the manual irrigation. Second one is the overhead irrigation. In that, sprinkler irrigation is to be recommended. So most of the greenhouse crops are most easily and cheaply irrigated from overhead irrigation. In this system, pipes are arranged from 60 centimeter to 180 centimeter above the plant. So this is the recommended from nozzle to nozzle gap from 60 centimeter to 180 centimeter, and the nozzles are fitted in the pipes at 360 pattern. So this is the way of sprinkler irrigation are to be installed. So what care should have to be taken? Water should be of good quality, properly filtered, so that these nozzles are not to be clogged. So overhead irrigation, in that the second one is the boom irrigation. So this boom irrigation we do recommend when we do have a greenhouse with high-tech greenhouse where we are producing the seedling systems in the cocoa peat, in the soilless media. That time we do recommend the boom irrigation, even though boom irrigation has a high cost. So that is the reason, only when the high-tech system is to be adopted, that time we do prefer the boom irrigation system. So what is the boom irrigation system? It consists of one or more pipes containing nozzles that apply water as the system moves over the plants. So it may be suspended from overhead rail system or from a cart. So what is the advantage of having a boom system, or why we recommend the boom system in the greenhouses, in the high-tech greenhouses? First, the reason is that it has a greater uniformity of water application. Like uniformly, each and every plant or the seedling get the uniform amount of the water, and so motility, if we see in the boom irrigation, is little less than we compared as a manual irrigation. So because of the large number of options, careful selection of a boom irrigation is required. Factors affecting selection are type and style of greenhouse, which crop you have to be adopted, which crop you have chosen, and the water quality, and the amount of automation is to be desired. And after that, we have the drip irrigation. In the drip irrigation, we all know why we using the precise use of the water. Drip irrigation is what? Precise use of the water, and जो भी पानी मिलता है वो कहाँ पे होता है? It is at the root system के पास जाके प्लांट को पानी मिलता है, and that is the best way, because इसमें जो सबसे ज्यादा क्या होता है, वेस्ट ऑफ पानी नहीं होता है. वेस्ट जो पानी का होता है वो वेस्ट नहीं होता है इसमें. बिल्कुल ही जो बहुत आप वाटर को कैसे मैनेज कर सकते हो, नेट्स को बहुत ही प्रॉपरली मैनेज कर पाते हैं हम ड्रिप इरिगेशन में. सो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कंट्रोल्ड एंड स्लो एप्लीकेशन. जो प्रेशर है वो काफी आप लो प्रेशर से भी पानी जाता है इसमें. सो इसका आप फ्रीक्वेंटली आप पानी दे सकते हो, और क्या कर सकते हो, प्रिसाइजली पानी होता है और वेस्ट ऑफ पानी नहीं होता है इसमें. सो द वाटर फ्लोज अंडर लो प्रेशर. So plastic pipes, tubing lays each row of the plant. So these are type of the drip irrigation. जैसे आप surface में दे रहे हो, soil में दे रहे हो, so this is one of the kind. Online देना है कहीं पे, and that is the second type example of the drip irrigation. Inline drip irrigation आप कैसे दे सकते हैं, in between the two rows when we are giving the water. So this is one of the example. And subsurface drip irrigation, कहीं नीचे beneath the surface में भी देना हो तो we can fit the drip lines and we can ये plant को पानी दे सकते हैं. So what it requires, for example, automation of the irrigation system. One is the pumps and the pumping station. Second are the valves. So what are the pumps and pumping station, and why it is to be essential? We know that the water is supplied at an adequate flow rate and pressure. So for that, a pump will be need to push water.
अगर पंप नहीं होगा तो पानी कैसे पुश नहीं हो पाएगा. सो a pump is to be needful to push the water from the source through the pipe and drippers. So most irrigation system include pumps में जो रहता है is an integral part माना जाता है ड्रिप इरिगेशन में, क्योंकि पंप के ऊपर ही क्या रहता है, बिकॉज अगर पंप पुश नहीं करेगा पानी को तो पानी इक्वली नहीं जाएगा, यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी. तो वो सारी चीजें पंप के ऊपर काफी सोर्स करती है. तो पावर सोर्स फॉर द पंप क्या होना चाहिए? द पावर सोर्स फॉर द पंप विल डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ द एनर्जी रिसोर्स इन द लोकल एरिया. इलेक्ट्रिसिटी एक गुड सोर्स माना गया है. सबसे पहले क्या है, आपको इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए. इलेक्ट्रिसिटी इज अ गुड सोर्स. इफ इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अवेलेबल, सो अल्टरनेट पावर सोर्सेस सच एज डीजल और एनी gasoline or solar may be used to source up the pump. So what are the valves? It plays a key role in controlling pressure, flow and distribution under different conditions. क्या करने के लिए? ऑप्टिमाइज करने के लिए. क्या ऑप्टिमाइज करना है हमको? परफॉर्मेंस हमें जो होनी चाहिए पंप की, परफॉर्मेंस जो हमारे इरिगेशन सिस्टम की होनी चाहिए, वो उसके ऊपर हमें प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है. तो प्ले करते हैं जो ऑप्टिमाइज करता है परफॉर्मेंस को, फैसिलिटेट मैनेजमेंट को करता है, और रिड्यूस क्या करता है? मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स को. सो वाटर फ्लो रेट एंड प्रेशर थ्रू आउट द इरिगेशन सिस्टम शुड बी प्रिसाइजली कंट्रोल्ड to ensure efficient and placement of valves is critical. So valves and the pumping station and the pumps are critical components while choosing any watering station, while choosing any of the source for the irrigation in the greenhouse. Automation is very difficult and is to be ये भी करना चाहिए. इंस्टॉलेशंस भी उसकी क्रिटिकल रहती है. उसके बाद आता है फिल्ट्रेशन. अभी हमें पता है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ड्रिप इरिगेशन में क्या प्रॉब्लम आती है. सबसे ज्यादा ड्रिप इरिगेशन में या किसी भी इरिगेशन में सिस्टम में क्या आती है कि चोकअप हो जाता है. चोकअप हो गया तो क्या हो गया, आपके प्लांट को पानी नहीं जाएगा, आगे पानी नहीं जाएगा. तो वो किसकी वजह से होता है? मोस्टली सैंड पार्टिकल्स की वजह से होता है. जो सैंड पार्टिकल्स पानी में होते हैं या ड्रिप इरिगेशन के अंदर चले जाते हैं होल्स के थ्रू, तो वो काफी प्रॉब्लम लाते हैं. तो वो चीज प्रॉब्लम ना आए, उस चीज को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें फिल्ट्रेशन सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहिए. तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्ट्रेशन सिस्टम्स. जैसे सैंड फिल्टर्स होते हैं. अगर ड्रिप इरिगेशन में मोस्टली हम लोग क्या करते हैं? सैंड फिल्टर्स को अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि सैंड की काफी प्रॉब्लम आती है, क्लॉगिंग की काफी प्रॉब्लम आती है. ड्रिप इरिगेशन में क्लॉग हो जाते हैं, पानी आगे नहीं जाता है प्लांट में. इसीलिए सैंड फिल्टर्स, हाइड्रोक्लोन फिल्टर्स, स्क्रीन फिल्टर्स लगाए जाते हैं. अगर बहुत सारा पानी तुम्हें कंकर भरा रहता है या पानी में जरा कुछ इम्प्योरिटीज होती है, तो उसको फिल्टर आउट करने के लिए पहले हमें ये फिल्टर्स लगाने पड़ते हैं. डिस्क फिल्टर्स होते हैं. ये डिफरेंट काइंड के फिल्टर्स हैं. हमें डिफरेंट कंडीशंस में हमें अडॉप्ट करने पड़ते हैं. पहले अपना जो हमारा पानी होता है उसको फिल्टर करें, फिर फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाना बहुत जरूरी होता है. नहीं तो क्या होता है, जो सिस्टम हम लगा रहे हैं जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया, मोस्टली ड्रिप इरिगेशन में ज्यादा प्रॉब्लम आती है. सैंड फिल्टर्स उसमें लगाए जाते हैं, नहीं तो क्लॉगिंग की काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है. सो ये क्या है, ये दिस इज वन ऑफ द क्रिटिकल कंपोनेंट. फिल्ट्रेशन सबसे ज्यादा क्रिटिकल कंपोनेंट है एनी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में. So effective filtration is essential for proper irrigation system operation, long term performance. As ये क्या प्रिवेंट करता है? इरिगेशन वाटर को क्लॉगिंग से. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहता है? क्लॉग नहीं होना चाहिए हमारे ड्रिपर्स, क्योंकि सैंड बहुत ज्यादा आ जाती है उसमें. क्लॉग हो गया तो क्या हो जाता है, हमें पानी नहीं, प्रॉपरली प्लांट को पानी नहीं जाएगा, पूरी लाइन चोकअप हो जाएगी. तो इसलिए फिल्ट्रेशन काफी क्रिटिकल कंपोनेंट माना जाता है किसी भी इरिगेशन सिस्टम का, मोस्टली ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का. सो वाटर क्वालिटी विल डिक्टेट फिल्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स, fertigation requirements, management of the irrigation system to prevent drip clogging. ड्रिप को क्लॉग होने से बचाता है. causes of drip clogging in any system may be chemical precipitation, physical हो गया जैसे पार्टिकुलेट सैंड है जो कॉज कर सकते हैं ड्रिप को क्लॉगिंग. एक हो गया केमिकल से,
प्रेसिपिटेशन हो सकती है या स्केलिंग हो जाती है कभी, फिजिकल हो गया ग्रिड या पार्टिकुलेट सैंड फंस गया उसमें, सेडिमेंट कोई फंस गया, और तीसरा वे हो गया कॉजेस का बायोलॉजिकल से, अलगे फॉर्मेशन होगी, बैक्टीरिया ग्रो हो गया अंदर, इसीलिए फिल्ट्रेशन सिस्टम हमें लगाने पड़ते हैं ताकि ये प्रॉब्लम्स हमारे फिल्ट्रेशन हमारे इसमें ना आए. So the type of filtration to be used is carefully selected at the planning stage according to the general quality of the irrigation water and the presence of various substances in it. So with respect to the specific requirement of the irrigation system, जैसा आपका irrigation system का requirement होगा उसी हिसाब से हमें filtration system भी लगाना पड़ता है. तो most critical कंपोनेंट्स हमने अभी तक देखे कौन कौन से हैं. एक तो ये फिल्टर है, दूसरा वेल्व है, तीसरा पंप है. ये हमें काफी अच्छे से चूज करने पड़ते हैं. फिर उसके बाद ही हमारा जो कोई भी सिस्टम लगा रहे हैं, जैसे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, तभी वो प्रॉपरली फंक्शन कर सकता है. ये क्रिटिकल कंपोनेंट्स माने जाते हैं. अब वाई फर्टिगेशन वर्सेस फर्टिलाइजेशन वर्सेस फर्टिगेशन. सो अभी आप यहाँ यू कैन सी द डिफरेंस. In the fertilization, plants get a larger dosage of fertilizer than they require at the time it is to be applied. For example, fertigation में क्या होता है, एक precise amount of water, precise amount of nutrients दिए जाते हैं पानी के साथ. For example, capsicum requires calcium, for example 1 kg. For example, total उसको मतलब 20 grams चाहिए कैल्शियम. For example बता रही हूँ किसी भी प्लांट को. तो आप 20 ग्राम्स ही उसको डिसॉल्व करके न्यूट्रिएंट बना के थ्रू ड्रिप इरिगेशन के दे सकते हो. मगर जब आप फर्टिलाइजेशन दे रहे हो तो आप कितना भी न्यूट्रिएंट दे रहे हो, उसमें आपकी कोई एक लिमिट नहीं है. तो ये भी एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है कि आप फर्टिगेशन दे रहे हो विद द हेल्प ऑफ ड्रिप, with the help of any other irrigation system. दिस इज ऑल्सो. सो एडवांटेजेस क्या है इसके, एक है वाटर सेविंग. आप ड्रिप इरिगेशन लगाते हो तो फर्स्ट एडवांटेजेस यू आर सेविंग द वाटर, एंड द सेकेंड एडवांटेज यू आर सेविंग द फर्टिलाइजर एंड इंक्रीज फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी. थर्ड इज एनर्जी एंड लेबर भी सेव कर रहे हो आपको. ईच एंड लेबर कंज्यूमिंग टास्क. सो आप उस चीज को कम कर रहे हो, एनर्जी को कम कर रहे हो, लेबर को सेव कर रहे हो, फर्टिलाइजर सेव कर रहे हो, इंक्रीज फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी बढ़ा रहे हो, वाटर को सेव कर रहे हो. आप रिड्यूस्ड वीड को ग्रोथ जो है उसको रिड्यूस कर रहे हो, क्योंकि वीड ग्रोथ आपने देखी रही कि ड्रिप इरिगेशन में बहुत कम आती है. बट आप अगर ऐसे प्लांट एक बड़ा सा प्लॉट लोगे और ऐसे ही आप फर्टिलाइजर डालते हो तो उसमें वीड ग्रोथ काफी आती है. तो ये सारी चीजें एडवांटेजेस है जो हम टेक्निकली हमने इतने अच्छे जो हम इरिगेशन सिस्टम्स अडॉप्ट कर रहे हैं, न्यू इरिगेशन सिस्टम्स अडॉप्ट कर रहे हैं, उनके सारे एडवांटेजेस है. मार्जिनल लैंड एंड अनड्यूलेटेड लैंड को भी हम इरिगेट कर पाते हैं. यूज ऑफ सलाइन वाटर भी कभी कभी पॉसिबल होता है, जैसे पीएच किसी प्लांट को ज्यादा चाहिए तो तब हम ये यूज कर सकते हैं. लेस प्रॉब्लम ऑफ डिजीज एंड पेस्ट की है. यस, आप डिजीज एंड पेस्ट को भी रिड्यूस काफी कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ, जब आप प्रिसाइजली पानी दे रहे हो, जैसे ड्रिप इरिगेशन रूट के पास ही जाके पानी देता है तो न्यूट्रिएंट्स भी वेस्ट नहीं होते हैं और डिजीज का भी आना, उन पे इन्फेस्टेशन काफी कम होता है. और इंटरकल्चरल ऑपरेशन भी काफी इजी हो जाते हैं व्हेन यू आर अडॉप्टिंग द न्यू इरिगेशन systems. After that is the subsurface irrigation. Subsurface irrigation में जैसे one of the example is event flow system. I already taught in the hydroponics. We are adopting this system for the production of the seedlings, mostly seedlings or any crop which like for example we don't want to give the overhead irrigation. That time we do prefer to irrigate with the help of the system of ebb and flow. So it is one of the system which are used in the hydroponic system. So इसमें क्या रहता है, if a sub irrigation system for potted and bedded plants is to be recommended. Pots or flats are grown in a leveled bench के ऊपर रखा जाता है which is made of plastic or the fiberglass available in various widths and the length. So these benches are glued together to make a bench of desired length and width. So there is a water tank. ऐसे एक रिजर्वायर होता है beneath the bench के ऊपर हम पॉट रखते हैं, ऊपर जो टेबल होता है बेंच के उधर पॉट रखे जाते हैं, उसके बीनीथ नीचे एक रिजर्वायर होता है
जिसमें आपने पंप जोड़ा रहता है, टाइमर बहुत एसेंशियल होता है एवेंट फ्लो में आप, क्योंकि यू हैव टू कीप द टाइमर। लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई हैव, मैंने कुछ प्लांट रखे हैं और मुझे आफ्टर 5 मिनट, आफ्टर 5 मिनट्स के लिए ही सिर्फ उसको इरिगेट करना है, तो मुझे टाइमर की काफी जरूरत है। फिर आधे घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद फिर मुझे उसमें 5 मिनट पानी देना है, तो टाइमर इज वेरी एसेंशियल इन द एवेंट फ्लो सिस्टम। सो टाइमर इज टू बी अडॉप्टेड हियर। आफ्टर दैट पंप होना चाहिए जिसके थ्रू पानी ऊपर जाएगा, and many other like water level sensors and many other components are which is are incorporated in the ebb and flow system to ensure watering of the plant. So water remains on the bench for 10 minutes according to your crop. If the crop is very small, you need not to give the water for 10 minutes. It is up to you, have to check the water whether like it is for the 5 minutes you have to give water, or it is for the 10 minutes you have to give the water, it is for the 3 minutes. It depends upon the stage of the plant it is in. If the plant is in a very small stage, so what happens, and giving the water timing should be reduced. If the water is in a higher stage, you have to give the water for a longer period of time, and collected then it रहता है रिसर्कुलेशन टाइप का रहता है। मतलब रिजर्वायर में पानी जाता है, पानी फर्टिगेट होता है, फर्टिगेशन बनाते हैं, फिर वो बेंच पे जाता है, बेंच से जैसे कंप्लीट होता है वापस रिजर्वायर में चल जाता है। सो इट्स अ रीसर्कुलेशन टाइप ऑफ फर्टिगेशन इनसाइड इसमें रहता है। पॉट विद बॉटम होल इज बेटर देन साइड होल्स। यस, इफ इट इज द बॉटम में होल में होगा तो क्या होगा, सब सरफेस इजीली हो जाएगा और वो पूरा रूट को पानी जा सकता है। So, and we have, I think, today we have the two topics, and second one is the smart farming. Now, everybody knows what is the smart farming nowadays. Sources. Smart farming is when you are using the AI sources. Now we are very much aware that nowadays, like AI are using to what, to monitor your crop, to giving the fertigations, to giving the pesticides. So there are many use of the AI now we are using in the agriculture. So for IoT systems are to be adopted. Like for example, if I have installed the greenhouse and I'm cultivating the for example, I have Now your installed the voice green. is break, man. Okay, my voice is not coming now. It is okay. Now it's okay, sir. Am I audible to everyone? Yeah, it's audible, ma'am. There is intermittent breaks in your voice. It's not Okay, clearly okay. audible. Now it is clear, Fully. sir. Yeah, it is clear, but there will be breaks, again Okay. and again. Oh, I'm so sorry for that. I'm extremely sorry. I will take care of that. So, Yeah, please. yeah, please. So, IoT, AI, so these are all the smart farming techniques we are adopting. For what we are adopting? Because we want to increase the quantity, we want to increase the quality of agricultural products. For that, we are introducing high-tech greenhouses. With the help of the high-tech greenhouses, what we can do, we can modify our microclimate. We can we can make a microclimate for the plants in which they can produce so that we can produce the high quality crop with respect to the modification of the temperature and the humidity and many other parameters which are to be suitable inside the greenhouse to give the better quality yield. So that is the reason now we are more focusing on the smart farming. We are focusing on the development of the sensors, soil sensors, Now hear which your can voice. give us. Well, Now again it is coming the again my voice is cracking, sir. Yes, Okay, ma'am, it is. it is cracking. Just a second. now your voice is break, Just a man. second. I think there's Not clear. okay. It is not clear. No, Just there a is second. still some cracking is there. Okay, okay. Give me a second. Give me a second. Let me think. We can't understand that Let me. because your voice is break. Okay, okay. No problem. Just give me a 5 minutes.
Just a second, sir. Hello. It's okay, ma'am. I think we are left with six more slides. You can continue. It's not a problem. Okay, okay. Just check once. Yeah. I have this. Yeah. Okay, so using the modern technology, so why we are using, why we are focusing the modern technology? We are focusing the modern technology because we have to increase the quality. So we are now more focusing on what, AI, which can help us for the better adoption of the new technologies, or to monitor our crop effectively. So we using the IoT. What in that IoT is what, like everything you can put your data in the cloud, and automatically all the greenhouse practices are to be maintained, like for example, giving the fertigation on time, it is to be done automatically. You can fertigate on time, your temperature and pressure are to be measure you can measure like how much temperature and pressure at humidity you have maintained in the inside the greenhouse, that is to be controlled automatically. So these are all the functions, or the ways, or the practices where we are now adopting to increase the quantity and the quality of the agricultural products. In that, the agriculture, it is what, it is an approach. Smart agriculture is an approach that help us to guide actions needed to transform and reorient agricultural systems effectively, and it support development and ensure food security in a changing climate. So it is one of the approach where we can transform our actions, we can reorient agricultural systems, and effectively it supports the development and ensure food security in a changing climate. Objective of smart farming is what, sustainably is what, like we should not harming our our environment. Without harming our environment, we have to increase the agricultural productivity and the incomes, adapting and building resilience to climate change, and reduce or to removing greenhouse gas emission where possible. What is the advantage of a smart agriculture? The advantage is that, like, it allows farmers to maximize yield by using minimum resources, water and fertilizer and the seeds. When you are minimizing these things, so, and you have to maximize your what, you have to maximize the product quality. That is one of the advantage of the smart agriculture. So solar powers are now to be introduced inside the greenhouse. With the help of that, you can जो रन करते हैं हम हाईटेक ग्रीन हाउस को, फैंस को, पैड को, उसको सोलार के साथ आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। आप पूरा जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको उसको हम काफ़ी बचा सकते हैं। सोलार पावर करते हैं, मोबाइल ऑपरेटेड पंप्स है, या मोबाइल के थ्रू हम आईओटी, जब हम आईओटी सिस्टम लगाते हैं तो उसमें आप मोबाइल से भी आप उसको चला सकते हो। इतना इजीली आप अपने ग्रीन हाउस को ऑपरेट कर सकते हो कि मेरे ग्रीन हाउस में अभी कितना टेम्परेचर है, मेरे ग्रीन हाउस में अभी कितनी ह्यूमिडिटी है, क्या वो ठीक से चल रहा है। तो आप अपने ऑफिस में बैठ के या कहीं पे घर पे हो, फॉर एग्जाम्पल कुछ काम पड़ गया, तो बट आप अपने ग्रीन हाउस को मॉनिटर कर सकते हो, क्या आपके प्लांट को फर्टिगेशन मिल गया। तो वो पूरा आईओटी आपके मोबाइल से भी आप उसको ऑपरेट कर सकते हो। सो ये एडवांटेजेस है स्मार्ट फार्मिंग की। अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती है, हर एक चीज की एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेज पार्ट भी है। तो अब डिसएडवांटेज क्या है इसका? पहला डिसएडवांटेज ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट कंटिन्यूअसली होना चाहिए। और हमें पता है कि रूरल पार्ट में, जो हमारा रूरल है, विलेजेस है, वहाँ पे इंटरनेट कंटिन्यूअसली थोड़ी सी एक डिफिकल्टी है। अभी तक कहीं कहीं पे इंटरनेट इतना कनेक्शंस नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। सो दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ द स्मार्ट एग्रीकल्चर। लाइक इफ आई वांट टू गो इन द विलेज, और मैं अपना हाईटेक ग्रीन हाउस खोलना चाहती हूँ या एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना चाहती हूँ, तो सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए? इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, जिससे मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे एआई ऑपरेट करना है, मुझे आईओटी ऐप ऑपरेट करना है, तो आई नीड इंटरनेट टू बी रनिंग देयर। So rural part of the most of the developing countries do not fulfill this requirement. So moreover, internet connection is slower. So smart farming based equipments, it requires farmers to understand and learn the use of technology.
सो दिस इज, जब टेक्नोलॉजी लर्न करना है किसी फार्मर के लिए, इट इज लिटिल डिफिकल्ट थिंग, बिकॉज कोई कोई फार्मर क्या रहते हैं, सम पीपल आर नॉट एजुकेटेड, सो बिकॉज ऑफ दैट दे आर लैकिंग इन दिस पार्ट. सो उनको समझाने में थोड़ा वी नीड सम ट्रेनिंग सेंटर्स, वी नीड सम टेक्निकल पीपल हु कैन गो, मतलब वहां जाए, उनको थोड़ा सा उसके बारे में बता सके कि कैसे हमें स्मार्ट फार्मिंग को अडॉप्ट करना चाहिए, उससे हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं. So this is what these are some of the disadvantages. So this is major challenge in adopting the smart agriculture farming at large scale across the countries. So what is the application of doing that? One is the application of the smart farming का क्या है? Smart irrigation. आप irrigation को कैसे, जैसे boom irrigation है, this is one of the smart irrigation system you are adopting. मतलब एक तो प्रिसाइजली आप पानी दे रहे हो और यूनिफॉर्मली इतने बड़े एरिया को आप इरिगेट कर रहे हो. So this is one of the example of smart irrigation. And another example is drip irrigation. Precisely इतना कम पानी आप दे रहे हो और वो भी रूट सिस्टम के पास, जहाँ पे पानी को सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है प्लांट को, उसमें आप क्या है, ना आपका पानी वेस्ट होता है, ना न्यूट्रिएंट वेस्ट होता है. सो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द स्मार्ट फार्मिंग इज स्मार्ट इरिगेशन. लाइफ स्टॉक मॉनिटरिंग भी आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट फार्मिंग. वेदर मॉनिटरिंग कर सकते हैं आप. मैंने वैसे ही बताया कि जो अभी हम कैसे कंट्रोल्ड सिस्टम, जो कंट्रोलर्स हम यूज कर रहे हैं ग्रीन हाउसेज में वेदर को मॉनिटर करने में, वेदर को या फोरकास्ट पहले ही होता है. सो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ स्मार्ट फार्मिंग. रिमोट मॉनिटरिंग, सॉइल क्वालिटी कंट्रोल करना कि क्या कौन सा क्वालिटी है सॉइल का, इज इट द पीएच इज सुटेबल फॉर द प्लांट क्रॉप कल्टिवेशन, क्या ये सॉइल ड्रॉट तो नहीं है, प्लांट हमारा इसमें अच्छे से कल्टिवेट होगा. दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ स्मार्ट फार्मिंग. ग्रीन हाउस मॉनिटर कर सकते हैं, ऑटोमेशन सिस्टम जो ग्रीन हाउसेज के आए हैं, सेंसर बेस्ड आए हैं, जैसे रिट्रैक्टेबल ग्रीन हाउसेज अभी तक बहुत चल रहे हैं, अभी नाउ इट इज गोइंग वेरी फेमस. सो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ स्मार्ट फार्मिंग. Thank you so much. Thank you very much, sir. Thank you, everyone.